में क्या करना है. So today we will continue with our next part of Trigo, and that part is factorization and defactorization. Now students, before starting the session, let me give you a brief idea about Eduauraa. What is this Eduauraa? ये Eduauraa क्या है? So basically we all know that Eduauraa is a digital learning platform. It is a digital learning app which provides you quality education all over India at an affordable price. And not only this much students, it doesn't provide you only video lectures, it also provides you many more things. What are that things? So basically Eduauraa provides you with mind maps, ebooks, past year papers, past year MCQs, 2D and 3D interactive video. लेकिन ये सब कब मिलेगा? ये सब हमें मिलता है ऐप डाउनलोड करने के बाद. So students, what are you waiting for? You have to download Eduauraa app. And one more thing students, one good news app, आपको 14 days free trial मिलेगा. And वो 14 days free trial में आपको क्या करना है? So basically what you have to do is you have to go through all videos, ebooks, mind maps and everything in that 14 days because maximum फायदा उठाना है उसका. So students, this is about Eduauraa. And now let's continue with our session. So students, as we discussed earlier, there are many trigo formula and आज के session में थोड़े बहुत trigo formula आज वापस learn करने हैं. So what are the trigo formula? So students, in today's session we will be discussing with factorization and defactorization and what are that formula. So basically factorization formula, remember the shortcut, the short form. What is that short form? Sine plus sine, sine minus sine, cos plus cos, cos minus cos. ये चार फॉर्मूला है. क्या है? साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस. अभी पब्लिक बोलेगा यहाँ पे एंगल कहाँ पे? नाउ एंगल यहाँ पे कोई भी आ सकता है. It can be CD, it can be XY, it can be LM, it can be PQ, it can be AB, it can be anything. So एंगल कोई भी आएगा, फॉर्मूला याद रखने का तरीका एक ही होगा. सो लेट्स से वी कंसीडर एंगल CND. सो बेसिकली द फॉर्मूला बिकम्स साइन C प्लस साइन D और उसका आंसर क्या होगा? 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C minus D by 2. So how will you remember the formula in a short form? It is basically sine plus sine is equal to 2 sine cos. How will you remember? Sine plus sine, 2 sine cos. Sine minus sine, 2 cos sine. Cos plus cos, 2 cos cos. And cos minus cos, minus 2 sine sine and 2 sine sine. कैसे याद रखोगे? I'll repeat it again. Sine plus sine, 2 sine cos. Sine minus sine, 2 cos sine. Cos plus cos, 2 cos cos. And cos minus cos is minus 2 sin sine, or you can say 2 sin sine. अभी एंगल हमने कंसिडर किए हैं C और D, तो आगे सब में C, पीछे सब में D. किस में? लेफ्ट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? आगे सब में C प्लस डी बाई 2, पीछे सब में C माइनस डी बाई 2. ओनली थिंग इज कॉस माइनस कॉस में दो फॉर्मूला थी. मैंने क्या दो फॉर्मूला बोली थी? माइनस 2 साइन साइन एंड 2 साइन साइन. सो व्हेन यू राइट माइनस 2 साइन साइन, तो वो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस C बाई 2. एंड सेकेंड फॉर्मूला बनेगा माइनस 2 sin sine, the first one. The second one is 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2. So what are your two formula? Minus 2 sin sine में पहले क्या आएगा? Minus 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. और सेकेंड में क्या आएगा? C plus D by 2 और पीछे आएगा D minus C by 2. So this is your four formula for factorization. Then defactorization पे अगर आते हैं तो डिफैक्टराइजेशन का भी चार फॉर्मूला है. और ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला कंपाउंड एंगल से आया. कैसे? नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज 2 sin A cos B, सो 2 sin A cos B बेसिकली किस में आता है? sin A cos B किस में आता है? यस, sin A cos B आता है sin A प्लस B में और sin A माइनस B में. तो 2 sin A cos B कैसे लिखेंगे? सो 2 sin A cos B बन जाएगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B. सिमिलरली 2 cos A sin B क्या बन जाएगा? sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B.
फिर 2 cos A cos B. So 2 cos A cos B किस में आएगा? So basically this cos A cos B comes in cos A plus B and cos A minus B. So when we combine them, what do we get? So we get 2 cos A cos B as cos of A plus B plus cos of A minus B, and 2 sin A sin B will become cos of A minus B minus cos of A plus B. So what are your four different formula for defactorization? 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin A minus B. 2 cos A sin B is basically sin A plus B minus sin A minus B. 2 cos A cos B will become cos A plus B plus cos A minus B, and 2 sin A sin B will become cos A minus B minus cos A plus B. So these are your 8 formulae for factorization and defactorization. So based on this formula, students, let's solve few sums, and the first question is what? So our first question is, prove the following. Sin 40 degree minus cos 70 degree is equal to root 3 cos 80 degree. So बच्चों यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? Now prove that है, मतलब right side correct है. So let us consider left hand side. So when we consider left hand side, what is given to us? Sin 40 degree minus cos 70 degree. Now हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सी है? साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस. मतलब दो साइन साथ में, दो कॉस साथ में. साइन और कॉस साथ में नहीं है, तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो. विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विथ, यू कैन डू इट. So in this case, students, I will convert sine in terms of cos. So can I write this sine 40 as sine of 90 minus 50 minus cos 70? So once I write this, once I get this, what is sine 90 minus theta? It is nothing but cos theta. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमें मिलेगा cos 50 degree minus cos 70 degree. Now ये कौन से फॉर्म में है? So this is basically in your cos minus cos form. What is cos minus cos? It is minus 2 sin sin. So minus 2 sin sin, cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. Correct? So when we solve this, हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलता है cos 50 minus cos 70 as what? So we get minus 2 sin, or you can say 2 sin 60 degree into sin 10 degree. What is sin 60? Sin 60 is root 3 by 2. So 2 into root 3 by 2 into sin 10 degree. So मिल गया रूट 3 इंटू साइन 10. आ गया लेफ्ट हैंड साइड. आ गया ना? नहीं नहीं आया. क्यों? क्या चाहिए? सो बेसिकली वी नीड cos 70 डिग्री, सॉरी cos 80 डिग्री. तो कैसे मिलेगा? अगेन मेक यूज ऑफ योर बेसिक ऑफ ट्रिगो. सो कैन आई राइट दिस एज रूट 3 इंटू साइन ऑफ 90 minus 80 degree. What is sin 90 minus theta? Cos theta. So root 3 cos 80 degree, which is nothing but right hand side, hence proof. And this is how you solve your sum. So students, समझा कैसे करना है? Yes. Now students, यहाँ पे जो मैंने साइन माइनस साइन कॉमन लिखा है वो डिपेंड करता है आपके एंगल के ऊपर. कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है. So accordingly you will have to put plus or minus sign. करेक्ट? मैंने अभी के लिए सिर्फ एक जनरल वैल्यू लिखा है, बट इट इज बेसिकली ऑन योर सम कि आपका एंगल कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है उसके ऊपर से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. करेक्ट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos 40 degree plus cos 50 degree plus cos 70 degree plus cos 80 degree is equal to cos 20 degree plus cos 10 degree. So how do we solve this?
Now students, in this case, we are supposed to prove something. Let's consider left hand side. So when we consider left hand side, what is given to us? Cos 40 degree plus cos 50 degree plus cos 70 degree plus cos 80 degree. So let us consider 40 and 80 together and 50 and 70 together. So we will rearrange these terms and write it as cos 40 degree plus cos 80 degree plus cos 50 degree plus cos 70 degree. Now, what is cos plus cos? It is 2 cos cos. So, we will write this as 2 cos c plus d by 2, that is 40 plus 80 by 2. So, यहाँ पे मिलेगा 2 cos 60 degree into cos 20 degree plus, what is cos plus cos? Again, it is 2 cos cos. So, 2 cos 120 by 2, that is 60 degree into cos, क्या आएगा 10 degree. Actually minus 10 आएगा, but cos of minus theta is what? Cos theta itself. Now, what is cos 60? Half. तो 2 और cos 60 cancel. तो क्या बचा? Cos 20 degree plus cos 10 degree, which is nothing but your right hand side and prove. And this is how we solve our sum. So students, आपको समझा कैसे करना है? Yes. Can we move on to the next question? Yes. So our next question is what? So our next question is, show that sin 8x plus sin 2x upon cos 2x minus cos 8x is equal to cos 3x. How do we solve? Again students, we have to show that, prove that, मतलब right hand side आना ही है. So let us write left hand side. Consider left hand side. क्या दिया है? Sin of 8x plus sin of 2x upon cos of 2x minus cos of 8x. Now, when you see your numerator sin plus sin, 2 sin cos, denominator cos minus 2 sin sin. So apply that formula and solve your sum. As I mentioned earlier, students, trigo sums are easy only if you know your formula. So that is the reason your formula are important, are must. So based on this, continue with your sum. What is sin plus sin? It is basically 2 sin cos. So what do we get? So we get 2 sin 8x plus 2x by 2 into cos 8x minus 2x by 2 whole upon, what is cos minus cos? Minus 2 sin sin, or you can say 2 sin sin. तो यहाँ पे मिलेगा 2 sin 2x plus 8x by 2 into sin 8x minus 2x by 2. 2 gets cancelled. Sin 2x plus 8x upon 2 gets cancelled. बचा क्या? Cos of 8x minus 2x. 8x minus 2x 6x. 6x by 2 is 3x. So we get cos of 3x upon, again 8x minus 2x is 6x. 6x upon 2x is 3x. So we get sin of 3x. And once we get denominator as sin of 3x, what is cos upon sin? Nothing but cot of 3x, which is your right hand side. Now there is a error student. It is basically cot 3x. So this is how you solve your sum and hence proof. So students, I hope you understood how to solve this. Yes. Now let's move on to the next question, and our next question is what? So our next question is sine 2 alpha plus sine 2 beta upon sine 2 alpha minus sine 2 beta is equal to tan of alpha plus beta upon tan of alpha minus beta. Show that some students, that means both sides are correct. Consider any one side and solve. I will consider left hand side. What is given? Sine 2 alpha plus sine 2 beta
upon sine 2 alpha minus sine 2 beta. What is sine plus sine? 2 sine cos. What is sine minus sine? 2 cos sine. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 sine 2 alpha plus 2 beta by 2 into cos 2 alpha minus 2 beta by 2 whole upon what is sine minus sine? 2 cos sine. So 2 cos 2 alpha plus 2 beta by 2 into sine 2 alpha minus 2 beta by 2. 2 cancel. क्या मिला? साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 2. 2 कैंसिल यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. What is sine upon cos, students? Tan alpha plus beta. And what is cos upon sine? It is cot alpha minus beta. आ गया राइट हैंड साइड? नहीं आया ना? क्यों? बिकॉज अभी भी राइट हैंड साइड एग्जैक्ट फॉर्म में लाना है एंड वी हैव टू मेक यूज ऑफ रिलेशन. सो व्हाट इज cot and tan? They are reciprocal of each other. So हमें मिलेगा tan of alpha plus beta upon tan of alpha minus beta, which is nothing but your right hand side. Hence proved. And this is how we solve our sum. So students, I hope you understood how to solve this. I hope it is easy. Yes. So let's move on to the next question. And students, what is the next question? So our next question is, prove that cos of 7x minus 5 plus cos of 7y minus 5x whole upon sine of 7x minus 5 upon sine of 7y minus 5x is equal to cot of x plus y. And how do we solve this? So students, again prove that sums. Let us consider left hand side. What is given to us? So our left hand side is cos of 7x minus 5y plus cos of 7y minus 5x whole upon sine of 7x minus 5y plus sine of 7y minus 5x. Now, what is in your numerator? So students, if you check your numerator, which form? Cos plus cos form. Cos plus cos क्या होता है? Cos plus cos is 2 cos cos. Denominator sin plus sin form क्या होता है? Sin plus sin 2 sin cos. तो अप्लाई करो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हमें मिलता है 2 cos 7x minus 5y plus 7y minus 5x upon 2. That is 2 cos c plus d by 2 into cos 7x minus 5y minus 7y plus 5x by 2. 2 cos cos c minus d by 2 आ गया upon sin plus sin 2 sin cos. तो 2 sin 7x minus 5y plus 7y minus 5x by 2 into sin plus sin 2 sin cos into cos 7x minus 5y minus 7y plus 5x by 2. ये गया 2 गया, क्या बचा? cos 7x minus 5x is 2x minus 5y plus 7y is 2y upon 2 upon sin 7x minus 5x 2x plus 2y by 2. So next step में क्या आ जाएगा? cos of x plus y upon sin of x plus y. What is cos upon sin? It is nothing but cot of x plus y. So students, if the answer is cot of x plus y, this is nothing but your right hand side and hence proved. And this is how we solve our sum.
समझा कैसे करना है? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व योर सम. इट्स ऑल अबाउट योर फॉर्मूला स्टूडेंट्स. अगर आपको फॉर्मूला आता है, अगर आप स्ट्रांग हो आपके बेसिक्स के साथ, 100% you will get your answer. So moving on to the next question students. The next question is what? So our next question is, prove the following: sine 6 theta plus sine 4 theta minus sine 2 theta is equal to 4 times cos theta into sine 2 theta into cos 3 theta. So, how do we solve this? So, first of all, let's consider left hand side. Sine 6 theta plus sine 4 theta minus sine 2 theta. Now, consider first two terms. सो फर्स्ट टू टर्म्स में जब हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन प्लस साइन टू साइन कॉस, तो यहाँ पे मिलेगा टू साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन 6 theta plus 4 theta by 2, that is 10 theta by 2, so 5 theta into cos 6 theta minus 4 theta by 2, that is 2 theta by 2, so वो हो जाएगा cos theta minus sin 2 theta. इतना मिला. फिर आगे क्या? Now 2 sin 5 theta into cos theta as it is minus sin 2 theta को लिख सकते हैं 2 sin theta cos theta, हाफ एंगल फॉर्मूला. अभी यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, वी कैन टेक 2 cos theta कॉमन. सो अंदर मिलेगा sin 5 theta माइनस sin theta. नाउ चेक योर राइट हैंड साइड. क्या चाहिए? सब टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में चाहिए. अभी भी दो टर्म है जो इसके बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे? वापस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करो. तो साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा मतलब साइन माइनस साइन का फॉर्मूला. व्हाट इज साइन माइनस साइन? 2 cos साइन. सो हमें मिलेगा 2 cos थीटा एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 cos 5 थीटा प्लस थीटा बाय 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा बाय 2. तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू 2 cos 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा. सो बेसिकली ये हो जाएगा 4 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा. क्या है RHS? 4 टाइम्स cos थीटा साइन 2 थीटा एंड cos 3 थीटा. मिल गया. So this is nothing but your right hand side, and it's proved. And this is how we solve our sum. So students, I hope you understood how to solve this. एक के बाद एक फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, आंसर पाते जाओ. This is the mantra. This is the funda which you have to remember. ट्रिगो फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करना है, फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग. ट्रिगो सम सॉल्व करना है, ट्रिगो फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करो, सम्स अपने आप आते जाएंगे. So students, moving on to the next question. What is the next question? Now the next question is, prove that sine 3x into, sorry, cos 3x into sine 9x minus sine x into cos x upon cos x into cos 5x minus sine 3x into sine 9x is equal to tan 8x. Let's consider left hand side. So students, when we consider left hand side, क्या मिलेगा? So first of all, let's write the question again. So ये है cos 3x into sin 9x minus sin x into cos 5x whole upon cos x into cos 5x minus sin 3x into sin 9x. तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन में दो दो टर्म दिए हैं, करेक्ट, पर डीफैक्टराइजेशन अप्लाई करने के लिए क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है. तो सब जगह पे पहले 2 डाल दो. तो 2 cos 3x इंटू साइन 9x माइनस 2 sin x इंटू cos 5x अपॉन 2 cos x इंटू cos 5x माइनस 2 sin 3x into sin 9x.
Now if you see properly, this part is in the form of 2 cos A sin B. This is in the form of 2 sin A cos B. This is in the form of 2 cos A cos B, and this is in the form of 2 sin A sin B. So सब जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर अपने आप आ जाएगा. So क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? So students, the next step here will become 2 cos A sin B. 2 cos A sin B क्या है? 2 cos A sin B is sin A plus B minus sin A minus B. So यहाँ पे मिलेगा sin 3x plus 9x minus sin 3x minus 9x minus 2 sin a cos b. क्या है? sin a plus b plus sin a minus b. तो ये हो जाएगा sin x plus 5x plus sin x minus 5x whole upon 2 cos a cos b. What is 2 cos a cos b, students? So 2 cos a cos b is basically cos a plus b plus cos a minus b. तो ये हो जाएगा cos x plus 5x plus cos x minus 5x minus 2 sin a sin b. 2 sin a sin b is what? Cos a minus cos a minus a plus b into cos a minus b. तो यहाँ पे हो जाएगा cos 9x minus 3x minus cos 3x plus 9x. Now क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप? So your next step will become sin of 12x minus sin of minus 6x minus sin of 6x minus sin of minus 4x whole upon cos of 6x plus cos of 4x minus cos of 6x plus cos of 12x. Now students, what is sin of minus theta? Minus sin theta. So हमें next step में मिलता है sin of 12x plus sin of 6x minus sin of 6x plus sin of 4x whole upon cos of 6x plus cos of 4x minus cos of 6x plus cos of 12x. यहाँ पे ये दो टर्म कैंसिल, यहाँ पे ये दो टर्म कैंसिल. क्या बचा? हमें मिलता है sin 12x plus sin 4x whole upon cos 4x plus cos 12x. चेक योर राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स. राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ tan 8x चाहिए. दैट मींस अभी भी सम को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. अभी आगे कैसे करेंगे? वापस हमें 4 टर्म से 2 टर्म में सम छोटा हुआ, अभी 2 टर्म से 1 टर्म में करना है. वापस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, साइन प्लस साइन और cos प्लस cos. व्हाट इज साइन प्लस साइन? सो स्टूडेंट्स, साइन प्लस साइन इज 2 sin cos. तो ये हो जाएगा 2 sin 12x plus 4x by 2 into cos 12x minus 4x by 2 whole upon cos plus cos, 2 cos cos, 2 cos 4x plus 12x by 2 into cos 4x minus 12x by 2. ये कैंसिल. sin 12x plus 4x by 2, 16x by 2, 8x. तो sin 8x हो गया upon cos 8x, which is nothing but tan of 8x, which is nothing but right hand side, and this is how you solve your sum. So students, this was about your factorization and defactorization formula, sums based on that.
So, students, I hope you enjoyed today's session. I hope you liked today's session. I hope it was easy and interesting. So, let's end this session here and wait for the next session. And, students, in next session, we will continue more with our trigo, and that will be basically your triangle law sums. So, the homework for the next session is, before I start with triangle law sums, you have to revise with all your trigo formula, because अभी जो triangle law के sums आएंगे in our next session, that is a complete mixture of all trigo formula. So there is no option के अगर ये formula छोड़ दिया तो चलेगा, वो formula छोड़ दिया तो चलेगा, नहीं चलने वाला है, आपको सब trigo formula learn करना है. The reason for that is not only to make your trigo strong, as I mentioned earlier, you have to learn your trigo formula to make your other topics strong of calculus and many more. So, this is Arpan Ashar signing off for the day. See to it you download the app. There is a 14-day free trial. Make the maximum use out of it. Enjoy.